Hi, very good evening, everyone. Hello, namaskar, dosto. I hope you guys are doing good. Welcome to this special session on USD-INR. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये एक स्पेशल वीडियो सेशन हाफ एन आवर का ऑन USD-INR और इस सेशन के अंदर में we will try to answer the question what is happening in USD-INR and where do we expect this to go. I am there. I'm going to analyze USD-INR for all of you. And I will also be joined by one of my favorite currency expert who will talk about USD-INR in detail. He's going to talk about the currency market overall or क्यों currency market tracking is important to get a holistic understanding about equity market and other financial assets. With your due permission, I would like to have some tea also while I'm having interaction with you because it's an evening time. And if you guys are okay, you can have your tea as well. Because आधे घंटे तक हम लोग बातें करेंगे करेंसी के बारे में. And why I want to talk about currency because बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते. And I strongly feel that the mother of all financial assets is currency. In fact, I started my career as commodities. A lot of people know about that. और कमोडिटीज के बाद में मैंने करेंसी में मार्केट में काम किया देन इक्विटी मार्केट ऑप्शंस में काम किया सो इट हैज गिवन मी अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में काम कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेड आपका स्कोप रहता है बट द मोमेंट यू ट्राई टू एक्सपैंड टू अदर एसेट क्लासेस इट रियली हेल्प्स यू टू एक्सपैंड योर हराइजन एंड बिकम अ सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट सो करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें just a minute. Let me just check. Some people are saying that my voice is getting echoed. So is that the case? Sananda, you are there with me. Is that the case? You think my No, voice sir, is getting... no echo. No echo from Okay, my no. side. Yeah, thank you. Thank you, Sanando, for that. I'm going to invite you very soon. But let me just talk about currency market. क्या हो रहा है उसके अंदर में क्यों हो रहा है जो हो रहा है और कैसे हम लोग को देखना है. I am going to talk about USD INR and dollar index and Sanando who is a currency specialist, he's going to talk about multiple currencies which he follows very, very closely. So let me just share my screen with all of you. And let me just first talk about currency market as an asset class. इसमें हो क्या रहा है USD INR के अंदर में चल क्या रहा है. So whenever we talk about currency, one thing is for sure that we also have to understand. Yes, मैं हिंदी में ही बोलूँगा but English and Hindi combine करने की कोशिश करूँगा because I want my knowledge to reach to wider audience. अगर हम लोग करेंसी मार्केट की बात करते हैं तो obviously we have to talk about dollar index first. So and this is not something which you guys don't know. I've been talking about it for some time that dollar index is the mother of all financial assets. और अगर इसके अंदर में कुछ भी हो रहा होगा तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा होगा. So if you are serious about market as an asset, as a serious occupation, and this is not for people who are only entertainment seekers. I'm here always to talk about serious learnings, not to just give you learning for the sake of learning. So currency market में डॉलर इंडेक्स को देखना सबसे इम्पोर्टेंट है और डॉलर इंडेक्स को ड्राइव कौन करता है यील्ड कर्व यूएस का यील्ड कर्व लुक एट दिस यूएस यील्ड कर्व 2-year yield curve is trading above 4%. इसका मतलब क्या समझ रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि ब्याज दर यूएस के अंदर में छोटी अवधि के लिए 4% से ज्यादा हो गया है तो मुझे बताइए 4% से ज्यादा अगर ब्याज यूएस में ही मिलेगा तो बाहर के लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे लॉजिकली उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए राइट और अगर बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या चांसेस है कि इन्वेस्ट ना करें तो रुपया का डिमांड नहीं होगा रुपया का डिमांड नहीं होगा तो रुपया वीक ही होगा दैट इज द मोस्ट देसी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप more technical way of understanding this relationship is the interest rate differential between India and US. तो 10-year yield को benchmark माना जाता है तो अगर आप US का 10-year yield देखें तो ये काफी हाई लेवल पे चल रहा है सिंपल सी बात है कि अगर यूएस के अंदर में पैसा बैंक में रख के 3.7% का ब्याज मिलेगा 10 साल तक तो इंडिया में पैसा कोई क्यों डालेगा लॉजिकली तो दैट्स व्हाई there is a possibility that foreigners they do exit Indian market although they have exited lot of money a couple of months but they have started putting in small money but Indian market को अगर कोई बचा के रखा है तो वो है Indian investor लेकिन रुपी जो है rupee is a direct function of two things flow of money from outside to India
एंड द सेकंड थिंग इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. तो 10 ईयर यूएस का यील्ड जो है वो 3.67% है, और यही 10 ईयर इंडिया का यील्ड, वेयर इज 10 ईयर इंडिया, लेट मी जस्ट सी. ओके, यहाँ पर नहीं है, तो लेट मी जस्ट इंसर्ट 10 ईयर इंडिया. तो बॉन्ड एड सिंबल इंडिया 10 ईयर जी सेक, इंडिया 10 ईयर बॉन्ड जी सेक, इसका यील्ड जो है, इसको ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज ऑलमोस्ट 7.3%. तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंशियल था वो काफी कम हो रहा है. तो सीधी सी बात है कि अगर डिफरेंशियल जब ज्यादा रहता है, इसका मतलब लोग यूएस डॉलर में बोरो करते हैं. लेट मी जस्ट डू अ क्विक स्क्रीन शेयरिंग, क्विक, या. तो सीधी सी बात है कि जब यूएस डॉलर का ब्याज कम होता है और इंडिया का ब्याज ज़्यादा होता है, तो यूएस डॉलर में लोग बोरो करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे. सिंपल सा गणित है. तो अब ये ब्याज का डिफरेंशियल अगर कम हो रहा है, तो यूएस डॉलर पे बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट करने का जो इंसेंटिव है वो बहुत कम हो गया. इंसेंटिव कम हो गया तो इंडिया में पैसे नहीं आएंगे और लोग यूएस डॉलर में बोरो नहीं करेंगे. तो ये बहुत बड़ा मैक्रो डेवलपमेंट है. इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच इज हैपनिंग ग्लोबली, and there is a reason why this is happening. And to discuss all the reasons and why things are happening और यूएस डॉलर में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आई वांट टू इनवाइट नाउ my colleague, one of the best forex analysts I've ever seen, Mr. Sanando Das. Hello, Sanando. थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो एवरीवन. होप अच्छे चल रहा है आप सब लोग का. वी हैड अ ग्रेट वीक इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. आई होप दोज हु आर ट्रेडिंग एंजॉयड द डाउनफॉल इन पाउंड एंड यूरो एंड द राइज इन डॉलर. Yes, yes, it was indeed a very good week. जो करेंसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं सरंदू, उनके लिए तो it was one of the best weeks after many days because this movement was so predictable. ये पता ही था यूएसडी आईएनआर बहुत दिन से आरबीआई कोशिश कर रहा है इसको रोक के रखने की, बट पता ही था कि जिस दिन आरबीआई डिसाइड कर लेगा कि हम ना रोकेंगे अब, उसके बाद ये अच्छा मूवमेंट देगा. सो इट्स ऑब्वियसली गुड. बट सरंदू, आई वांट यू टू टेक अस थ्रू सम बेसिक्स अबाउट करेंसी की. क्या मैटर करता है, कैसे इम्पैक्ट होता है, और करेंसी को देख के इक्विटी से क्या ओपिनियन लिया जा सकता है? First of all, hello everyone. So you don't may not know me. You can get my views in StockEdge Social. I'm associated there in currency commodity section. You can learn from me from some courses in learn markets. So my broad idea is currency market. Indians should try it out first of all, because it is an asset which, especially for retail traders, can give excellent return. Of course, it is a high returning asset. That means it can cut your throat as well. But if you can see the post, and if you have some decent setup, yes, you can earn some good money when equities are not performing, especially during this time. सो करेंसी ट्रेडिंग का फंडामेंटल है, टेक्निकल है, सेंटिमेंट है. बट one thing, when we are approaching as a trader, not as an economist, not as an analyst, जब trader की तरह approach कर रहे हैं, we should understand first we don't have the absolute knowledge. That is not possible. We have the broken pieces of knowledge जिसमें हम puzzle को बनाने का, जोड़ने का कोशिश करते हैं. वो रहा fundamental part. सो इसमें जितना आप डीप जाएंगे उतना डीप जा सकते हैं. वी कैन लुक एट आरबीआई डेटा, वी कैन लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बट एज ए ट्रेडर, इफ वी रादर व्हेन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल, थोड़ा बेसिक्स पे फोकस करें, जो कॉमन सेंस है उस पे फोकस करें, तो फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा, rather than ओके, going to the jargons. तो चलिए एक फंडामेंटल पे फंडामेंटल चल. मैं सही हाँ, मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हाँ. हूँ. सर दोनों बढ़िया फंडामेंटल हाईलाइट किए, जो शॉर्ट टर्म का क्रॉस बॉर्डर फ्लो और दूसरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. और एक फंडामेंटल का बात मैं करूंगा जो थोड़ा मीडियम टर्म है और जो सबसे बेसिक है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. वो क्यों क्यों हमें वो पैसा चाहिए दूसरा का करेंसी. रिसेंटली हम लोग बैंकॉक गए थे और मुझे थोड़ा शॉपिंग करने का मन हुआ, but I saw they are not ready to accept Indian rupee, so they are exchanging it for Thai baht. So Thai baht, if I want to purchase something in Thai baht, that means Thai baht is needed and Indian currency is not needed. Now we have to just go to the trading economics. Can I share my screen? Yes, 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 please.
By the way, in the meanwhile, Sanando is sharing the screen. Sanando is part of one of the mentorship program which we run called Multi-Asset Trading Mentorship Program. ये इंडिया का पहला और एकमात्र mentorship program है जहाँ 5 mentors हैं और multiple assets की बात होती है. Sanando takes care of the currency, commodity. Chetan takes care of the options. Shorodip takes care of the technicals. I take care of the knowledge part, and Kaushik takes care of the trading psychology and advanced things. So अगर आपको ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड है, if you want to build a career as a trader, part time or full time, multi asset trading is something which you should aspire. And I think we have the best team who is offering that learning program. Sanando, please do share your screen. Yeah. Yeah, मेरा I can स्क्रीन आई see होप it. दिख रहा है. Yes, 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 yes. Yeah, this is our balance of trade. You can see every month we are losing about 30 billion, 28 billion dollar, and this Hmm. money need to be financed. This money gets financed. What Vivek sir said, cross border flows, equity में flow आ रहा है, bond में flow आ रहा है, तो that gets financed. दूसरा it gets financed through FDI, fixed जो investment आता है काफी time period के लिए. For example, recently US announced it would invest say 5 billion per year into India. That means that is our FDI. So there is still a large gap remains which needs to be financed. And when US Federal Reserve is increasing the dollar interest rate, that means we have to finance that rate, finance that deficit at higher interest rates. So this is our deficit. You can see it is growing larger and larger. And the effect, I hope my new screen would be visible. Mm, 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 No, it's mm. not. I Just a don't think moment, so. Yeah, please. you need to. Yeah, you need to share the entire screen. While he changes the screen, let me just clarify one point that it is not important that you trade all the asset class at one point because सबके पास उतने पैसे नहीं होते हैं सब asset class में invest और trade करने के लिए. But clue लेने के लिए multiple assets का knowledge होना बहुत ज़रूरी है. Broader market का एक view बनाने के लिए. That's what we recommend to everyone. That's why this TMP program is there. Yes, Anandu. हाँ, मैं ये चार्ट एक्चुअली सबको दिखाना दिखाना चाहता हूँ ताकि Yeah. आप कुछ लेके जा पाए एटलीस्ट मिनिमम ये हाफ एन आवर सेशन पे. इट्स वेरी Hmm. डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग बट एटलीस्ट यू कैन टेक समथिंग. So this is the USD INR chart which I am shrinking 1991 till data is there, and you can see it has been going up. So this is, sorry, this is Nifty, just a mistake, but you'll see the same chart getting reflected in USD INR as well. So this Yeah. is USD INR continuously weakening, and this trend is not likely to change unless we check our foreign exchange reserve. I mean, sorry, we check our trade balance, we check our manufacturing deficit, we check our commodity deficits. Unless we do that, this trend is not likely to change. So this has been a losing battle for our Reserve Bank of India, and I've been highlighting that. Those who are into club members, you can see in my post that I've been highlighting this one. So this has been I have several setups. So this is one of my setup. This is for long term positioning, which is जिनको passive income चाहिए, तो ये system में apply करता हूँ overall, but only to the sell side for a rolling contract. So, एक बार, Sarando, can we talk about the basic charts? Like this is the more advanced chart which you train us in the program, but can we talk about more basic chart की USD INR में trend कैसे identify करें? ट्रेंड ये एक्चुअली मैं बेसिक चार्ट में ही जाता हूं, बट दिस इज एक्चुअली जस्ट अ ट्रेंड सिस्टम, एंड दिस ग्रीन सिग्नल मींस वी आर एक्चुअली इन अ बाय ब्रेकआउट. So we Oh, discussed this in the Bangkok webinar. This is an easy setup, but it's a 100-year-old setup. So let hmm. me share another screen. ये रहा सर मेरा ब्रॉड सेटअप. मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप ये वाला है. आई एम ए कलरफुल, आई लाइक कलर, सो मेरा थोड़ा कलरफुल है. आई होप आप लोग देख पा रहे हैं ये Yeah, सेटअप को. yeah, 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 yeah. तो इस बेसिकली कैंडल स्टिक्स चार्ट्स. कोई अलग
स्पेशल टाइप कुछ है नहीं, दिस अ सिंपल कैंडलस्टिक्स चार्ट, मंथली चार्ट, मंथली ब्रेकआउट इज हैपनिंग दोजी के बाद, तो क्लियरली अप सिग्नल तो है ही। थोड़ा वीकली चार्ट देखेंगे तो सिमिलर सिग्नल आएगा, देखिए यूएसडी, व्हाट अ मूव। आरबीआई हैज बहुत कोशिश किया 80 पर रोकने का, बट आरबीआई हैज गिवन अप द थ्रोन द टॉवल, क्योंकि फेड हैज डिसाइडेड 75, another 75, फिर मे बी इन दिसंबर विल डू 50, बट दैट्स स्टिल अबाउट 125 to 150 बेसिस पॉइंट्स अवे। मतलब इंडिया का जो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है ये कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जाएगा जब तक फेड ये इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है। एंड ये जो सर ने विवेक सर ने हाईलाइट किया क्रॉस बॉर्डर फ्लो, मैं थोड़ा और उस पर डेटा हाईलाइट करता हूँ। रिसेंटली आई चेक्ड इट अबाउट थ्रू ब्लूमबर्ग कि फ्रॉम जुलाई थिंग्स एक्चुअली चेंज्ड एंड इंडिया रिसीव्ड लॉट ऑफ मॉनेटरी इनफ्लोज टू द ट्यून ऑफ 8 बिलियन टू इन द इक्विटीज एंड डेट मार्केट, बिकॉज अपना स्प्रेड छोटा हो रहा है, जो सर बोले वी गॉट अबाउट $800 million का इनफ्लो। तो उसके वजह से आरबीआई को थोड़ा हेल्प मिल गया था कि ओवरऑल इस जगह पे 80 एरिया पे स्टॉप करके रखे। बट अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है आरबीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, आइदर यू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट्स और लेट द करेंसी फ्लो। या तो अगर मैं भी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सनंदू, जस्ट या 1 minute, so this is my screen. So if I, this is more advanced setup which Sanando has shown, but this is more easier setup from my side. And if you look at simple lines, simple trend line, it works fantastically in USD-INR. जैसे ये नीचे में dollar index है, let me just convert this into a single chart here. So this is trading view which I'm using. Let me do it daily. अगर हम सिंपल लाइन से ही चीज़ों को एनालाइज करें, ऑब्वियसली जितना आप एडवांस करेंगे उतना आपका कन्विक्शन और बढ़ता है, बट यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन हियर, सो यूएसडी आईएनआर, दिस वाज सॉरी ये लाइन गड़बड़ हो गया। Okay, let's go to the dual chart only. Sorry about that. Setup पूरा गड़बड़ हो गया. So if you look at dollar index, look at the dollar index trend. Simple uptrend में dollar index है बहुत दिनों से, and this is USD INR daily chart. If you draw a simple straight line here, and if you draw a kind of a trend line here, so this is what pattern, Sunandu? Sorry, you're mute. This is which pattern, right? सॉरी सर मैं म्यूट था। वेज मैं तो जनरली ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ, इतना याद नहीं रहता, वेज हो कुछ हो। Almost, I mean, it's a triangle, but it's a wedge triangle. Yes sir, So yes. wedge pattern. So look at this. What Sananda was saying that ये यहाँ पर जो आरबीआई काफी कोशिश कर रहा था ना, यहाँ पर कोशिश किया, और जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे गया, रुपी भी अप्रिशिएट कर गया। ऑब्वियसली रुपी अप्रिशिएशन भी करता है जोर से, बिकॉज ये आरबीआई यहाँ पर एक्ट करती है। ये पूरा यहाँ पर इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर कंट्री हैज आल्सो गॉन डाउन, बिकॉज आरबीआई जब डॉलर बेचती है, this is the time when RBI is selling dollar. So with dollar index going down, RBI is selling dollars. So that's why it has gone down. But कब तक करेगा? अगर डॉलर इंडेक्स ही ऊपर के अपटर्न में है, तो आरबीआई एक पॉइंट पे जाके उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। गैप अप खुल के लुक एट दिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला कि योर हाई एंड लो, सॉरी ओपन एंड लो इज द सेम। तो गैप अप खुलने के बाद में इसने जो लो बनाया है वही उसका ओपन है। तो यहां से दिस लेवल बिकम्स सच एन इंपॉर्टेंट लेवल। 80 के ऊपर यूएसडी आईएनआर सस्टेनिंग इज अ नो ब्रेनर, बट डू वी एक्सपेक्ट दिस की गो ऐसे ढन 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 ढन? नहीं, ये कोई अडानी का शेयर नहीं है जो ये चलता रहेगा। दिस इज यूएसडी आईएनआर, जहां पर आरबीआई का रोल है कि टू मेंटेन अ बैलेंस इन द करेंसी मूवमेंट, नहीं तो पूरा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यस, इट विल गो अप। अब क्या हो गया, इसका प्रोपेंसिटी टू गो अप इज देयर, नॉट दैट इट विल गो अप इन अ हरी। तो मे बी ऊपर जाएगा, थोड़ा करेक्ट करेगा, एंड दैट हल्का सा करेक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन डॉलर इंडेक्स। तो जब भी डॉलर इंडेक्स हल्का सा करेक्ट करेगा, यू सी मोर करेक्शन हैपनिंग
in USD INR. That means rupee will appreciate, but I don't see rupee going below 80 anymore. Um, I mean, I think वो हमारे लिए past हो जाएगा. I think so. Looking at the intensity of rise it has seen, so it will go up. Correct, as per डॉलर इंडेक्स. अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता रहा तब वो धीरे 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 ऊपर जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा. बट डॉलर इंडेक्स अगर नीचे चला गया तो चांसेस है कि ये फटाफट नीचे आएगा 80 की तरफ, एंड 80 कुड बी अ ग्रेट लेवल टू एंटर दिस अगेन. One of the way every one of us can participate in currency market is through currency options. And Sanandu, sorry, I'm stealing the thunder from you, but just to give more actionable perspective to people, uh, जब हम एनएससी की साइट पे जाके अगर यूएसडी आईएनआर का ऑप्शन चेन देखें ना, आई थिंक people who are not participating in options in USD INR are missing big time, because इसके अंदर में इतना स्कोप है strategies बना के काम करने का कि that it's not a joke. It's really really exciting to have options. If someone wants more detail about options, currency, etc., they can connect with us later offline. But this is what I wanted to share with you. Sananda, you can continue. Thank you, sir. Yeah, true. USD INR options are actually great to earn both passive money. Active money का option मैं थोड़ा कम ही बोलूँगा because it's largely sellers market and it's a bit different than equity option. It takes time for the theta decay. So when you are say selling an USD INR option 80 level, you don't say put options you're selling because we are expecting market to go up. That means you are expecting to hold that trade till the expiry in currency, which we do not do in case of equities. Otherwise, you won't get the theta benefit. So, Right. and USD-INR you can participate because of RBI. I'll strongly recommend if you participating on the future side, please sell call. That means it becomes a covered call strategy. So that even if RBI is intervening, when the call side, the sell call side will work for you when the future falls. And or I think I'll one question has come up that is regarding GBP INR because that person has a position in that. So let me discuss GBP INR. Yeah, yeah, yeah. Cross currencies is a very different ball game, because cross currency is not just about INR. It's about also the rate between that cross currency with USD and the rate between USD INR. So every cross currency has to be studied independently. Yes, Anandu, I can see your screen. So this is GBP INR. देख सकते हैं. I'm sorry to disappoint you, sir. You are actually on the wrong side in GBP INR and GBP USD. What a run it has given in weekly. Look at the closing. You don't have to look at other setups, but just the candle. Weekly candle is a solid down move candle, and only thing that might work for a buyer is this is the RSI, a different kind of RSI, but you can check the value 20. So RSI has reached oversold level, so a bounce back can happen. That only will work for buyer. Even in 3 hour chart, which is my favorite for positional trades, I can see strong downtrend. Only the risk is there will be sharp pullback of profit booking or slight dollar weakness. Otherwise, pound GBP USD I'm significantly short. StockEdge social, you can check my views. I recommended going short around 1.14 area. That call is there. So that call is around sitting around 240% margin gain. That kind of return is possible in currency. So that kind of cutting throat is also impossible in currency. So if you have a trade, you sir must have some outlook while taking the trade. If it has gone sour, it is best to get out of the trade, and because we can always earn tomorrow. Tomorrow can be a fresh day, but if we marry our position and keep on hoping, that could be a serious damage in the foreign exchange market, because these are not equities. They have no long term holding value. In fact, there are paper currencies which lose value over time. So Yes, GBP, I that will is. definitely one thing. Another point out that you don't have to rely on, or we don't have to rely on any complicated setup. But just look, we have to look at those candles. This was a bullish engulfing. The time it broke 90.17, we should have gone short on GBP INR. This was a clear bullish engulfing. Similar story is happening in Euro INR.
So I highlighted that I was the bottom hunting on this. Sometimes it works, but it's always the risky. But you can see the bullish engulfing is gone, and proper entry would have been on the buy side. But I had some other theories as well, but it didn't work. RBI defended rupee, and euro was pretty weak. So since this trade has soured for me, I'll not marry my position. I'll do, I'll try to find an exit if a bounce back is happening. If not, if this is breaking or this level is breaking, depending on the situation, I will recommend my students, and even for my positions, I'll recommend exit. So this is Right. broadly the situation in GBP and euro. Sir, to you. Right. So, you made a very valid point that currency commodity बच्चों के खेलने की चीज नहीं है. It's a very different ball game. Yes, you can make much more money in those instruments and as an ROE because the margin requirement is lesser in both the instrument. But stop loss is extremely critical. वहां पर अगर आपने जिद कर दी तो वो पूरा आपको खत्म कर सकता है. So if you at all Exactly. are thinking about doing currency trading, you need to be 100% sure about the risk management. Otherwise, it's like you are buying options, right? And you need an extremely superior level of risk management when you are buying option. Otherwise, you can lose entire money if you are a full long in options. Talking about social post where Sanando is posting, so let me also share with you this lovely platform which we have developed called StockEdge Social, where Sanando is also constantly updating us. This is him with 6,600 followers. This social platform is only open for club members, and this is what he is doing in this platform, giving us a 360-degree perspective about markets, about currency, commodity. He did share his view on GBP USD a couple of days ago, in fact, on Friday, and so on. So he keeps on doing all these things, and obviously, even I am always doing all these different stock ideas which I feel will work for me. I also keep on sharing those stock ideas in Stock Social. So in case you guys want a real time guidance from us, you can aspire to become part of Stockage Club, or you can join Trading Mentorship Program if you want to become a multi-asset trader. And if you are okay in what you are doing, we are always there in social media platform to help you in your journey to comprehend what's happening in the market. Thank you, Sanando, for giving your time, and thank you everyone for attending this. I hope it was useful. So keep track of USD-INR. It is in a very exciting zone. Opportunity बहुत है. करेंसी ऑप्शंस पे काम करना चालू करिए, छोटे कैपिटल से करिए, पर थोड़ा थोड़ा करिए. उससे क्या होता है, माइंड जो है ना चलने लग जाता है, और जितना हम इसको चलाएंगे उतना ये हमको चलाएगा, है ना. चलिए, गुड नाइट एंड प्लीज टेक केयर. विल सी यू सून. बाय बाय. Good night, everyone.